Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshakarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare
Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Vashyata Deshatarini Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna. Welcome all of you. Today on time to our weekly Bhagavad Gita classes. So we will read one purport and one verse and then we will start. So we are at the end of the first chapter. First. 40 finished. Yeah. Sankaro narakayeva kulanghanam kulasya cha patanti pitaro hiyesham luttapindodaka kriya. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. An increase of unwanted population certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performances for offering them food and water are entirely stopped. Purport: according to the rules and regulations of fruitive activities, there is a need to offer periodical food and water to the forefathers of the family. This offering is performed by worship of Vishnu because eating the remnants of food offered to Vishnu can deliver one from all kinds of sinful reactions. Sometimes the forefathers may be suffering from various types of sinful reactions, and sometimes some of them cannot even acquire a gross material body and are forced to remain in subtle bodies as ghosts. Thus, when remnants of prasadam food are offered to forefathers by descendants, the forefathers are released from ghostly or other kinds of miserable life. Such a help rendered to forefathers is a family tradition, and those who are not in devotional life are required to perform such rituals. One who is engaged in the devotional life is not required to perform such actions. Simply by performing devotional service, one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kinds of misery. It is stated in the Bhagavatam 11.5.41, Devari Shri Bhutap Nranam Pitranam Na Kinkarona and Ranicha Rajan Sarvatmana Yes Naranam Smaranyam Gato Mukundam Pariharte Kartam. Anyone who has taken shelter of the lotus feet of the Mukunda
the giver of liberation, giving up all kinds of obligation, and has taken to the path in all seriousness, owes neither duties nor obligations to the demigods, sages, general living entities, family members, humankind, or forefathers. Such obligations are automatically fulfilled by performance of devotional service to the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. Ganpati Bappa Moria. Mangal Murti. You know why he is called Mangal Murti? Why he is Vigna Vinashak? He is supposed to remove obstacles, right? So there is a scripture by Brahmaji, Brahma Samhita, the first living entity in the universe. He sings in the Brahma Samhita that Lord Ganesh holds lotus feet of Lord Narasimhadev on his forehead. And because Lord Narasimhadev is Vigna Vinashak, so he gets his power from him. So therefore actually the proper worship of Ganeshji performed by actual Brahmanas, when they bathe deity of Lord Ganesh in the Ganesh Utsav or various pujas, they keep one Shaligram Shila on top of Ganeshji and then bathe. So the water that is bathing Shaligram, that is Lord Vishnu, Charanamrit, उससे फिर गणेश जी का अभिषेक होता है. Because Vishnu is the Supreme Personality of Godhead and Ganesh ji is one of the demigod assisting in the management of the universal affairs of this cosmos. So this is Ganesh Jayanti. So therefore when you pray to Lord Krishna or when you pray to Ganesh ji to remove obstacles in worshipping Lord Krishna, then Ganesh ji becomes more happy. Instead of just asking for removing obstacles in material life, मेरा जॉब में ये प्रॉब्लम है, मेरा हेल्थ में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, he may do that, but he becomes pleased when you specially ask for removing obstacles on the path of bhakti. So that is Ganesh Chaturthi, Ganesh Jayanti. आप सबको बधाई हो. गणपति बप्पा मोरया. हमारे मंदिर में एंट्रेंस में ये देखा है ना आपने गणेश जी. कभी कभी लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले केवल कृष्ण की पूजा करते हैं. We worship everyone, but we have to have a clear idea of who is who. What is his position? Where he is situated? बराबर ना. घर में भी डेजिग्नेशन होता है ना आपके. माता है, पिता है, बच्चा है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमा है, सब डेजिग्नेशंस है ना. Not that everyone is one. सब एक हो जाएगा तो सेवा कौन करेगा एक दूसरे की? For the sake of service, these hierarchies are there. So when they remove, सब एक ही हैं. गणेश जी भी एक हैं, शिव जी भी एक ही हैं, कृष्ण सब एक हैं. You worship anyone, you will go back to Godhead. जैसे कि दिल्ली का टिकट खरीदने से आप कलकत्ता जाओगे क्या? You buy a ticket for Calcutta, you go to Calcutta. You buy a ticket from Ganesh ji, you go to Ganesh Loka. Means heavenly planets, not to the Vaikuntha Loka. So like that. So this is what the anxiety of Arjuna. So I think we have discussed 5 reasons till now. Yeah, 4 reasons. Oh, 4 we completed. Okay, tell me one by one. Meanwhile, I'll open my PPT. ये पूरा फट रहा है पेपर. बार बार ट्रैवल करके नया फाइल लगाना पड़ेगा. पुराने जमाने का लगता है. नहीं है, फाइल लेके आए हैं, ऑफिस में है, बट टाइम नहीं मिला मुझे. Yeah, so what are the 5 reasons? Very compassion for his relatives. He is feeling compassion for his Relatives. and then second, Loss of enjoyment. why loss of enjoyment? Because there will be no one who will enjoy after he kills everybody. Yes. हाँ, किसको दिखाएगा अपना कर्तव्य? मेरे से उस्ताद कौन है संसार में? Who will show him? बच्चा पढ़ाई करके आएगा, अगर पिताजी डिग्री को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो बच्चे का आनंद 0. You appreciate ना your kids. Correct. भले कुछ भी लेके आया हो, मतलब अच्छा ही लेके आता होगा. Still you enjoy, right? Wow, मेरा बेटा. नहीं, yes, yes. Rest कर रहा है. He is not feeling well. Oh, what happened? Yeah, he's got throat, back throat.
Okay. So you appreciate, right? Yes. मेरा सोनू मेरे गुड्डू कितना अच्छा मार्क्स लेके आए हैं. So yeah, so loss of enjoyment. Then third, Fear of sinful reactions. why sinful reactions? Because if he पाप लगेगा. क्यों पाप लगेगा? हाँ, उससे भी ज़्यादा बुरा है. Killing in general people is a sin. Especially killing your Family member. all family members is even. Of course, in the eyes of God, even if you kill one ant, you are committing a sin and you are punished for that. यमराज का स्टोरी मालूम रहेगा ना आपको? यमराज महाभारत से नहीं मालूम है? Why Yamraj was born as Vidur? Vidur ji is Yamraj. He was cursed. You don't know that story. I was not there in Mahabharata, so we didn't know. So there was one Rishi, Pandavya Rishi. One time he was cursed. Not cursed, but he was called to the Yamloka. And then he asked, what happened to me? Why you are calling me here? I am not supposed to be here, I am a Rishi. Then the Yamdutas, they said that in your childhood, you pricked one small insect with needle. And that is the punishment for you. For some time you have to be here. You will be pierced by some sharp, pointed things. And then once that is done, you can go. So then Mandavya Muni said that I did that in innocence. I was a child. I didn't know. छोटा बच्चा कुछ करता है तो you don't take. But laws of nature are very stringent and very, formidable. You can't surpass them. Just because you don't know, if suppose there is a small child and he puts his hand in the fire, fire will not say, "अरे बेचारा innocent है यार छोड़ दो," जला देगा ना. So they gave that reasoning. Then Mandavya Muni also became angry. He said that इतना छोटा सा कारण के लिए इतना बड़ा सजा. And I was a child, so I curse you that you take birth in the family of Shudra. He cursed Yamaraj. So of course this is a higher arrangement. Then Yamaraj was born as Tasiputra. Dhritarashtra, sorry. Yeah, you know that story, Ambalika. Yes. विदुर जी का जन्म कैसे हुआ था? 3 पांडु, धृतराष्ट्र and विदुर जी. So that is, so how I was connecting it? Sin. Yeah, even if you kill one ant, there is a sin. What to speak of family members? So this is third reason. What is the fourth reason? Destruction of family value. Yeah, that is what we are discussing from verse number 39. Kulakshaya Pranashanti Kula Dharma Sanatana. So the connection here is, I hope you all are chanting Hare Krishna. Yes. One round, one. One some days now. How many rounds he chanting, you know? I don't want to get into this. दिन रात अभी ये काम कर रहे हैं. He got into number game. Not number games. We are, see, do you count Lakshmi? Means money. Do you count money? You don't count. अगर आपको किसी आपका सैलरी मिलता होगा ना, आपको क्या है, आपका बिजनेस है, जॉब है, सैलरी आता होगा ना, तो आप पहले देखते हैं ना कितना डिजिट आया है बैंक में. और डू यू से आने का ना कुछ तो आया है सैलरी. किधर मार्केट में जाते हो काउंट करते हो ना. So without counting, things will not proceed, right? You are not sure how much I have received or how much I am giving. Similarly, when you come to God, you have to count how much I am giving to God. Not that notes, but Japa Mala, you have to count how much I am giving to God. God is giving me so much. This body, this home, this house, children's wife, everything God has given to me. What am I giving to Him? So counting is required. So counting is important. So you all have to count. So he is counting, I think, 14 rounds. So good. Subair, morning you wake up before breakfast, maybe on the road. रात
See, he's been added to another special group where there are 315 people. They keep chanting throughout the day and they keep posting. 16 हो गया, 16 हो गया, किसी किसी का 64 हो गया, किसी का 50 हो गया, किसी का 40 हो गया. So what है? It just becomes very normal figure. एक सवाल है. जवाब दो पहले. नहीं मैं सवाल आपने ग्रुप बनाया. हाँ. उसमें मैं बोलता हूँ. See, this is again I feel little you are trying to satisfy your ego. Who? जो ग्रुप बनाया उसमें. किसके लिए? Why you say मैंने 14 किया, 18 किया, 20? No. Listen. मैं यही सवाल था. Sometimes people feel like that. अच्छा, why do you study in the association? Why don't you study alone Bhagavad Gita? Can you study alone in home? इधर ही आके पढ़ाई होता है ना. जितना होता है इधर ही होता है. घर में जाके होता ही नहीं है. Is it? This is a fact, right? So just like you have, association for everywhere. आपका रहता है ना बिजनेस का एसोसिएशन रहेगा. आपका बिजनेस में एक लोगों का एक ग्रुप रहेगा ना. आपका भी रहेगा ना ऑफिस में एक ग्रुप बना रहा है. हर जगह ग्रुप है कि नहीं? यहाँ भी आपका एक ग्रुप है कि नहीं? नीचे सिक्योरिटी उनका भी एक अपना ग्रुप है. Where they identify their goals, their objectives, their SOP क्या बोलते हैं उसको? Standard Operating Procedure for their regular duties. तो अभी दुनिया के सांसारिक चीजें करने के लिए ग्रुप है, फोरम्स है, एसोसिएशंस है. स्पिरिचुअल करने के लिए नहीं लगेगा क्या? विदाउट दैट यू कैन नॉट सर्वाइव ओनली. तो ये एसोसिएशन क्या है? आप बोलेंगे आप लोग क्या दिखा रहे हैं क्या? हम लोग गीता पढ़ रहे करके. वी काउंट ना. ये चैप्टर 1 हो गया, इतना वर्स हो गया. डू वी काउंट और नॉट? और डू वी स्टडी रैंडमली? अरे कुछ भी करो नहीं ना. And in the current age, that is Kali Yuga, the power is in association. कलो संघ शक्ति. बाहर मोर्चा लेके जाओ, बीएमसी के सामने 2 लोग जाओ, बीएमसी तुमको अंदर बंद कर देगा. 50 लोग जाओ, बीएमसी सीरियस हो जाएगा. अरे 50 people, 100 more around. सिक्योरिटी देगा. हाँ? सिक्योरिटी देगा. हाँ, सिक्योरिटी देता है फिर. See, I got the answers from you only. I am not saying anything. So when devotees come together, Krishna gives extra security. Extra security देते भगवान. Conviction देते अंदर से. You are doing right. Continue. Do it. Now you tell me, how many people are chanting there? कितने लोग chanting करते थे? 16 is a normal figure. And they chant. Most of them chant during morning time till 12:30 they complete their 16. It doesn't bother you the counts that they are posting. It is just whatever I can do from my side, I do and I. Yeah, but that posting is for what? It is 2 things. Unless you are accountable to someone, you will not do it. Especially spiritual. आप जॉब पे जाते हैं because you are accountable to whom? To your wives, kids, your family expenses. You are accountable, right? Otherwise क्यों करेगा? जैसे अगर बाबा बन गया है, if somebody is a monk, then मतलब there are 2 things. monk में भी 2 कैटेगरी रहते हैं. लेक्चर आगे बढ़ेगा, don't worry. This is part of this. One is called Goshtanandi, other is called as Bhajananandi. Bhajananandi means there are some sadhus who just do bhajan. उनको संसार से कुछ लेना नहीं. वृंदावन में जाइए आप, या फिर आप गए होंगे, वैष्णो देवी, ऋषिकेश, यहाँ वहाँ जाके देखते हैं ना. There are some sadhus, they just stay in one place, they do their bhajan. जो मधुकरी में मिलता है भिक्षा मांग के भोजन, उसी से खाते हैं. कहीं एक जगह पेड़ के नीचे, कहीं किसी किनारे में, कहीं गुफा में, कहीं जगह मिल गया सोते हैं. नदी का पानी पीते हैं, जो कपड़ा एक तरह से मिलेगा पहनते हैं. What a tension-free life, Prabhu. No tension of EMI, no tension of school. Kids going to the school. What he is doing in the school? Whether he is studying or not. मोबाइल में क्या देख रहा है? कितना एंजाइटी है. I'm not saying to get rid of the anxiety you go to the Vrindavan and become Babaji. But there is also another duty. But I don't know यहाँ पे.
And other is Bhajanananda, Goshtanandi, one who does bhajan plus does preaching. तो हमारा ISKCON का लाइफस्टाइल ये वाला है, भजन भी करो प्रचार भी करो, because you have to help people also. But there are people like that also. So when we have association, it becomes very easy, very easy. मतलब आप बोलेंगे कुछ भी नहीं है यार, 16 तो क्या है, कुछ भी नहीं है. अभी आपको बड़ा बिल्डिंग लग रहा है ना, but once you start, you begin. आप लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया था JOSD, तभी आपको लगता होगा ना अरे क्या इतना बड़ा कोर्स कर रहे हैं हम लोग, 7 दिन में खत्म हो जाएगा. कितने सेशंस थे? 6 सेशंस, right? Yes, but we took some time. You are going beyond 6 sessions. You completed the first chapter of Gita, and by the time Arya comes to the Mumbai, we also will complete entire Gita. Association में बड़ा आसान हो जाता है. That is the secret. That is the magic formula. So whoever reaches the 4 rounds standard will be added to that group if you like. Wow. Great. Big goal. Very good. Enthusiasm is contagious. So he's getting, contaminated. Spiritual contamination is good. So like that, please keep chanting. Because that is the goal of our Gita study. Because Krishna will say that in the Gita, Manmana bhavad bhakto madhyaji mam namaskuru. When you meditate on me, then you get the essence of Gita. Unless we meditate on God, we will never get purified of all our sins, unwanted things. So like that. So now the question of origin is, if the elders of the family they are killed, who will train? कौन देगा ट्रेनिंग उनको? And I think last time we covered the verse number 40, yeah. And there are some things to be clarified in the verse number 40. The questions. I already mentioned that. Let us go point by point. First thing, Varna Sankar. Varna Sankar मतलब क्या दिया है word to word में? Unwanted progeny. आज का ज़माना मतलब क्या है? There are only unwanted progenies. Varna Sankar or unwanted progenies, they are born by 2 ways. First thing, improper marriages. Improper marriages मतलब अभी आप शादी किए और देखे होंगे ना, कास्ट सब मैच करता है कि नहीं. So suppose Shudra, he marries a Brahmana, that is improper marriage. उनसे जो होने वाला प्रोजन है improper रहता है, except for some rare cases and exceptional cases. This is first case where the progeny who is born is Varna Sankar in the sense, इसलिए आप देखते हैं ना कि सेम इसका होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, कास्ट का होना चाहिए या फिर गोत्र का होना चाहिए, right? And second thing, children born out of marriage, these are also called as Varna Sankar. So basically Varna Sankar or the child who is born out of marriage or improper marriages means those children they don't have samskaras. संस्कार विहीन बच्चे जो जन्म लेते हैं, they become terrorists. In the sense that when you try to beget a child, there are samskaras. सबसे पहले स्टार्ट होता है when you want to, if in the traditional Vedic system, a husband, he goes to the guru, spiritual master, and he takes permission that I want to have a child through my wife. Can I? He takes the permission. And when guru gives the permission, then only he can, then only can pregnancy happen, otherwise not. This is Vedic culture. Because the responsibility is to give good culture and training to the child who is taking birth. ये तो पहला हो गया. उसके बाद
और एक संस्कार रहता है, उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। मतलब गर्भ को धारण करने के पहले ही husband and wife, in ISKCON that rule is there, but of course depends on the seriousness of the couple, how they follow. It is recommended. 4 rules are already there. No intoxication, no gambling, no meat eating, no illicit sex. And sex outside marriage. And even within marriage also, when you want to beget a child, husband and wife, they come together and chant 50 rounds of the Maha Mantra. Not together, 25. 50 and 50 means they prepare their consciousness that we want to have a child who will be useful to the society, who will be godly, who will be God conscious, who will be responsible. इस भावना में जब बच्चे को जन्म दिया जाता है, then that child is very, sattvic, very obedient, cultured. Otherwise, आजकल कैसे होता है शादी? Now these purports of Srila Prabhupada, when Westerners they read, बाउंसर जाते हैं उनको। बोलते ये क्या है? कौन सा वर्ण संकर के? हम तो हमारा जिंदगी वर्ण संकर है पूरा। We are, मतलब आजकल तो मोस्टली ऐसे केसेस होते हैं। People they do not have training. They have a sex life, and child is just a near byproduct. People don't, unite together in the divine plan of the Lord that we want to bring a soul to this world and train him and liberate him from this world. Saturday night whiskey, disco party and बच्चे का गर्भधारण हो गया। ऐसे बच्चे पैदा होने के बाद क्या करेंगे? खुखार डाकू बनते हैं, नहीं बने अभी आप बोलेंगे कि बॉम्बे में तो सब डाकू नहीं दिखते हमको। Not that डाकू means बंदूक लेके घूमेगा, तलवार लेके घूमेगा। By mentality he becomes demonic. Then he doesn't believe in God, doesn't become obedient to his parents. ऐसे संस्कार विहीन बच्चे पूरे संसार में हैं। और इस पर्पट के एंड में प्रभुपाद कहते हैं irresponsible men also provoke adultery in society, right? So that is women's liberation movement. मैंने पढ़ाया था आपको जेविएसडी कोर्स में। प्रसाद को टाइम है वाटर, ओके वाटर इज अलाउड। कहीं हेवी तो नहीं गया ना परपोर्ट? नहीं, परपोर्ट इज हेवी, नो डाउट। तो इसलिए लोग डर जाते हैं। जब मैं बेस में था ना, बेस मतलब एक्चुअली यूथ का ट्रेनिंग सेंटर रहता है ISKCON का, जहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब उसके अंदर प्रॉपर भगवान के डिटीज वर्शिप के, जैसे मैंने कल डाला था वीडियो भगवान के वेलकम का, गौर निताई का। So they stay there. So as a youth we used to just joke around. तो बोलते थे अरे शादी करेगा ना देख 50 माला करना पड़ेगा। तो कुछ लोग बोलते थे अरे यार इसे 50 माला कौन करेगा, इससे अच्छा शादी कर 50 माला बहुत ज्यादा है यार। And actually you will be surprised, the standard rule is, of course जो फॉलो करते नहीं करते। One is not to associate with anyone outside marriage. Second, even within marriage, the wife is approached only for procreating child, otherwise not. This is standard, very highest rule. Depends on the couple how they are serious. But this rule is, those who follow, they really become very effulgent or very spiritualized, because ultimately bodily attraction is for few months, few years only. उसके बाद तो केवल लोग, मतलब society is such that there is only false propaganda that इसमें आनंद है जीवन में। So all around, throughout your newspapers or social media, televisions, they tell you this is the life, enjoy, drink करो, enjoy करो, मजा करो। But क्या है उसमें enjoyment हम सबको पता है। How much is the enjoyment we also know. But because people don't have any option, इस आनंद के अलावा और कोई आनंद है क्या?
There is no option. So people, they come back to that same pleasure only, which ultimately, binds you to the material world. Because in many of the purports and scriptures, sex life is one which binds one to the material life. So of course, you are a married couple, you have your life, you can have your, within the religious boundaries, your life. But then you have to see who am I, from where I am coming, where I have to go. इसलिए शास्त्र में 50 साल होने के बाद husband and wife, they are not allowed to stay together. They have to compulsorily take vanaprastha. This 25 years, first years, no question of associating with any woman. That is brahmacharya life in the Gurukul traditional system. सबको भेजा जाता था. घर में 5 साल का बच्चा हो गया, he has to go to Gurukul. चाहे वो बड़ा राजा का लड़का क्यों ना हो, कृष्ण भी गए थे ना. लेट हुआ बाद में, क्योंकि वृंदावन में लीला करते रहे, इसलिए द्वारका जाने के बाद, सॉरी मथुरा, खुद से गए, बोले मुझे जाना है पढ़ाई करने के लिए, संजीवनी, मतलब वसुदेव और देवकी ने भेजा उनको, जाओ जाओ पढ़ाई करो. Then of course he is God. So within 64 days he mastered all the vidya, learning everything, Gurukul पूरा कर देगा. So Sudama was a Brahmana, very poor boy. Krishna was prince, but both of them studied under Gurukul. Why? That is the system. So 25 years, no connection. Next 25 years, if he wants, if the boy wants to go into the married life, then he can go. If he doesn't want, he can continue on like brahmachari. Even if he goes, आगे सिर्फ 25 साल ही. Married life is only for 25 years. When the senses are very strong, when you are not able to control, then you are allowed a wife. Then you stay in the home, be responsible grahastha, beget children, raise them nicely, educate them, and then when children are grown up, at the age of 50, you must retire. If you don't retire, then there is a term in the Shastra they call as Grahamedi. There is one term Grahastha, आपने सुना होगा. Grahastha मतलब one who lives a life according to scriptures. Grahamedi मतलब one who is attached. Just like वो रेशम का कीड़ा रहता है, मालूम है आपको? रेशम बनता है ना, कपून रहता है उसका, सिल्क, राइट? वो अपने आप को अंदर बंद कर देता है. You know that? अपने आप को अंदर बंद करके फाइनली मर जाता है. So the life of a modern householder, typically in the current time, is like that of that silkworm. अपने आप को बंद कर देता है अंदर घुट के मर जाता है. Now even if he wants to get out after age of 50, he cannot because there is no training. बचपन में गुरुकुल तो मतलब आश्रम का ट्रेनिंग तो लिया नहीं है, गृहस्थ आश्रम में भी रहा नहीं ठीक से, अटैच वे में रहा, and after that how he will retire? Not possible. So that's why this training in the modern time. So right now we may not have the varnashram system like brahmachari, grihastha, vanaprastha, but this kind of training that you get through study of Bhagavad Gita, when you visit temple, associate with the deities, sadhus, that is the training to prepare yourself to get detached gradually. क्योंकि एक बार एज हो गया तो सेंसेस भी शांत हो जाते हैं. बट सोसाइटी ऐसा है कि एजुकेशन इतना है, स्टिल बड़े बड़े लोग पिक्चर देखने जाते हैं. क्यों? अभी मरने का तैयारी हो गया है. नाउ यू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लाइफ. अभी पिक्चर देखने का टाइम नहीं रहा. पिक्चर जिंदगी देख लिया ना पूरा, मालूम भी पड़ गया संसार क्या है, कितने दुख हैं. नाउ यू स्टार्ट योर ऑनवर्ड जर्नी, बट देयर इज नो ट्रेनिंग. दैट्स व्हाई पीपल जस्ट घर में रहते हैं और गाली खाते हैं. सो द जो बच्चे रहते जो बड़े हो गए, दे जस्ट कीप गिविंग बैड वर्ड्स टू द पेरेंट्स, इजंट इट? तो इनकी गलती है बच्चों की, ऐसा नहीं करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हमारा भी उम्र हो गया है, हमें अभी क्या करना चाहिए? अध्यात्म करना चाहिए. बट आप घर में ही बने रहोगे और तिजोरी की चाबी पकड़ के रखोगे. बहू कहती है सासू माँ चाबी दे दो, सासू माँ कहती है नहीं ये चाबी मेरी है. अब हो गया आपको उम्र, यू एंजॉय योर लाइफ, नाउ गिव मी. आपके तो दो बहू आएंगे इधर, बराबर ना? तो पता चलेगा. One question.
like you said. Now this is all related to our syllabus. Huh? Don't think it is outside. Yes. This is the importance of elders in the family. See, but, I but there is a question on this. Like you said, ki after a certain age, you give up on everything and do your spiritual activities and everything. But we as children feel, we would like to include our parents, we would like to take them out, we would like to do things for them. So then, how does that deem it wrong that, okay, I've taken him today, I'm taking my father-in-law out, I'm taking my mother out for a movie or something, just to, take them out, have some fun. A little fun doesn't Change for So what is the problem? That's what I'm asking. You There is said a big problem. See, you have to understand. See, that's why training is required, education is required. You have to understand what is the goal of life, where they are supposed to go now. Do you want them to keep watching movie till the end of their life, and in the next life become something else, some animal, or again take birth in this world and suffer? What do you want for them? उनको आपको भगवान के पास भेजना है. अभी लोग क्या है गलत समझते हैं. भगवान के पास जाना मतलब मर गया. भगवान का अपना घर है, अपना धाम है. Just like there is a heavenly planet. That's what we are going to come in the second chapter. आप क्या चाहते हैं उनको? And सच्चाई क्या होती है? आदमी जितना बूढ़ा होता है ना, he cannot enjoy. Even if he wants, he cannot enjoy. बहुत प्रिपरेशन सामने रहेगा, नहीं खा सकता वो. तबीयत नहीं बनती. बॉडी साथ नहीं देता है, या फिर Disease. ये तो 40 के बाद चालू हो जाता है. मेरे को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, सीवियर 7.58 तक जाता है कभी कभी. पेन इन द जॉइंट्स. So as soon as I take little bit of extra of cheese, paneer, all that, it shoots like anything. कंप्लीट करते हैं इसको. उसको भी आपको भी है, सबको है. But how? So, Let me complete her question. I'm sorry. No issue. So they cannot enjoy, but they see those things where people are enjoying. They get tempted and frustrated like anything. I want to enjoy, but I cannot enjoy. If they come to the temple, they see, service as the source of their enjoyment. Isn't it? Then they can become happy. Instead of tempting them with things which will again put them into misery, ये सब सिनेमा दिखा के क्या करोगे उनको दुनिया के एंजॉय करने की इच्छा भड़केगा और desires will just flame like anything, but they cannot enjoy. And after all, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा हम यहाँ पे क्यों आए, कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में, ये जानना जरूरी है ना. कि जिंदगी भर उनको पिक्चर दिखाते रहोगे. You may think this is best for them, but as per shastras, as per the our teachings, so अभी पंजाब से आपको भी पता रहेगा ना, आपके इसमें भी करते होंगे ना लोग. Not मतलब Not really. what do they do for old people? I'll tell you. So what has happened now? What is happening Huh. rather is when people start doing all of this, when they start giving away their worldly things, it is deemed as a bad thing कि अरे उसने घर परिवार छोड़ के अभी 50 के बाद छोड़ दिया, सब संसार वगैरह सब छोड़ दिया, and is doing only सेवा और धर्म और whatever. It is looked down upon. Why it is looked down? Because this is what The society is that way. मतलब शराब पिएगा सड़क में और लड़की को आलिंगन करेगा, that is considered wow, what a civilized man. वो चौपाटी बरंडे में हमारे करते हैं लोग उधर आकर, सिगरेट पीते हैं, लड़कियां सिंगल लड़कियां ऐसे. So this is considered modern. Why? Because this is civilization of cats and dogs. Cat and dog, they have sex life in the street. बराबर है कि नहीं? They don't have discrimination of mother, father, sister, brother, open कहीं भी. A human being is the one who is supposed to be civilized, covered with clothes, और जो भी करना है अपने घर में रहो, शांति से रहो, as per scriptural injunctions within the religious boundaries,
you enjoy your life. So अगर लोग समझते हैं कि शराब पीना स्टैंडर्ड है सोसाइटी का, आजकल आप पार्टी में यही करते हैं ना, बड़े बड़े जो पार्टीज अरेंज करते हैं लोग, फिर यही बोला जाता है, अरे बच्चे ध्यान नहीं रख रहे, देखो माँ बाप कैसे हो गए। see I am not saying that, you are a responsible householder, you take care, बराबर है। एक बार 50 साल हो गया तो कौन सा केयर लेना है आपको बच्चों का? What care you will take? If you are when you are 50, आपका बच्चा कितना साल का हो जाएगा? 25। जॉब पे लग जाएगा तब तक, राइट? बिजनेस संभालेगा, क्या करेंगे आप ज्यादा उसके लिए? वो बोलेगा मैं अभी खुद अपना कर सकता हूँ, वो ये भी बोलेगा डोंट इंटरफियर इन माय लाइफ, आई विल डू माय थिंग्स ऑन माय ओन, आई नो हाउ टू मैनेज माय लाइफ, माय बिजनेस एंड एवरीथिंग, ही विल से राइट ऑन योर फेस, he may be saying right now also. My question. उसको छोड़ दो, let him enjoy. You chant your rounds. भाई देखिए, मॉडर्न सेटअप ऐसा है कि आप क्या घर छोड़ के नहीं जा सकते कहीं पे, you can't go to the वृंदावन and become बाबा, Yes. आप इधर ही रहेंगे। मेरा ये कहने का अर्थ है आप यहाँ पे रहिए, बच्चों के साथ रहिए, परिवार को घुमाने भी लेके जाइए, कभी कभी थिएटर में भी जाएंगे, बट देन try to, हाँ, लेकिन अभी क्या आपके लिए संभव है क्या वृंदावन जाके रहने के लिए? नहीं ना, ये घर वृंदावन बनाना है हमको। That's why bring the lordships, worship them, चाहे हरे कृष्णा, उनको बिजनेस करने दो, जो एल्डर्स हैं उनको अपना करने दो, कभी कभी घुमाने लेके जाओ, मंदिर लेके आओ। सी करना है तो उनको तीर्थ यात्रा लेके जाओ, करते क्या कभी? अच्छा ऐसा बोलते हैं वो, मुझे बच के रहना पड़ेगा जब आते हैं तो बताने वाले तो इसलिए ऐसे देखते हैं। He spoiled my family. जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। वो बोलते हैं दूसरे कोई बच्चा बिगड़ गया। So he may be saying, Yeah, he says. this brahmachari has spoiled my family. He says, Not for you. Not for you. Let's say for you. He says for us ये गलत लाइन पे चले गए। गलत लाइन पे चले गए। जल्दी ये लाइन पे चले गए because the age. See, that's why a responsible householder is one who takes care of his business, family, health, everything. He's an expert. At the same time, he knows how to chant my rounds, how to take care of my spiritual life. That is a proper grahastha, and that example is when there is in the society, others get inspired. अरे अभी हेमा मालिनी है, वो भी 16 माला करती है। Do you know that? लोग देखते हैं अरे हेमा मालिनी है, एक्टिंग करती है, घर संभालती है, बिजनेस वाला भी करती है, कर सकते हैं। मतलब कृष्ण चंद्र प्रभु है, he's such a big person, he does. It is possible. Possible क्या है? Prabhupada said human being मतलब 16 rounds. Anybody who is not chanting 16 rounds is still yet to become human. Because that is our breathing. This is oxygen. बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं हम लोग। भगवान का बेसिक आराधना है वो, एक इंसान होने के नाते। वो नहीं करेंगे तो हम मतलब इनका दीक्षा हो गया अभी। He got initiated. What is your name now? मेरा कितना एक्सेसिव है वो के नाम पे भूल गया। बलभद्र प्रसाद दास। अभी हुआ ना, एक दिन पहले हुआ। कल परसों हुआ। बलभद्र मीन्स बलराम जी, बलराम प्रसाद मतलब कृपा, बलभद्र प्रसाद प्रभु। So you saw around 1000 people got initiated in temple. You will also get. So that is the importance of elders in the family. Now elders they may say many things because there is no training ना, training नहीं है। I'm not saying कि मतलब uncultured है, they are cultured, but the emphasis on spiritual life is not there. People feel I am believing God, so that's okay. थोड़ा अगरबत्ती घुमा देता हूँ, मैं अपना घर परिवार संभाल रहा हूँ। So Shastra says even animals they also raise the family. जानते हो कि नहीं? किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन एक पंछी भी अपने घोंसले में बच्चों को बड़ा करके ही बाहर छोड़ता है। जब तक बड़ा नहीं होता है ना वो छोड़ता नहीं घोंसला। We know that. जब मैंने आश्रम ज्वाइन किया तो मेरी माँ बोलती थी जिस प्रकार पंछी डायलॉग मारती थी मेरे को, पंछी घोंसले में बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, बच्चा बड़ा होता है फिर उड़ के चला जाता है।
So of course now she's, वो बाद में उनका दीक्षा भी हो गया, she is now happy. वो बोलते उधर गए, तो दो बहुओं का एक्सपीरियंस लिया घर में हमारे, टू डॉटर इन लॉज, एक तो उधर नेपाल में है, एक इधर है। इधर वाली शांत हो गई क्योंकि वो भाई वो भी दीक्षा लेने के लाइन में है अभी। उसके घर में भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, डीटीज गौरविता है, बोथ हस्बैंड वाइफ दे चैंट 16 राउंड्स। वो थोड़े कड़क है गांव वाले, तो दोनों का अनुभव लिया 3-4 साल के अंदर बोली तू है उधर, आई एम हैप्पी फॉर यू। अभी तो अगर मैं भी अगर बोलूं मैं बोले नहीं 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 नहीं, नाउ यू कांट कम, यू स्टे देयर, बी हैप्पी। सो यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Yeah, that made us. You answered. No, the question was now. Suppose the elders, how you convince them to be spiritual? अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं बहुत। सी This is right. I can join something. जो हमारे elders हैं ना, they are not that spiritual. Or even I seen it. Like my papa was there. So I used to tell him, I used to go जानना शिव ज्योतिर्लिंग दर्शन करने। बोला आप चलो हम लोग साथ में जाते हैं, make a together. हाँ मैं बताता हूँ, मैं करता हूँ। ऐसे बोल कब नहीं मैं उसी में ही मस्ट बी। तो कहने का मतलब क्या अभी इन लोग का कैसा है, even like there are sometimes my wife and their parents, they are not that supportive. वो generation जो पहले वाला generation है ना, 60s का जो 50s का generation, they are not supportive. वाओ, 60s के ओल्ड गाने, they are not supportive. सब उसका प्रभाव है प्रभु। नहीं supportive. 60s 80s 90s के जो गोल्ड मेलोडी वाले गाने आते हैं ना, करण अर्जुन, ये बंधन तो प्यार का, मैं कभी लगाता हूँ जस्ट टू फ्लैश बैक कि दुनिया कैसे थी अभी क्या हो गई। सब ये बॉलीवुड का प्रभाव है। नहीं बॉलीवुड का नहीं, उनका अभी क्या बॉलीवुड की पिक्चर नहीं देखे? I agree बॉलीवुड का प्रभाव। हाँ, बॉलीवुड तो बाद में। आज अगर बॉलीवुड बोले ना, चाहे हरे कृष्णा 16 राउंड्स, आज अगर विराट कोहली बोले, मैं लिख के देता हूँ आपको, रणबीर कपूर एंड रणबीर सिंह आपके फेवरेट है? नहीं मेरे भी not at all. तो मैं even my daughter was small now, my in-laws never bothered to take any responsibility. For what? We don't want Spiritual? नहीं just my daughter's responsibility. हम लोग we wanted to go out somewhere. There are certain things that अच्छा okay, you want to go for धाम दर्शन and this and हाँ that? नहीं कहीं पर किधर भी? तो हम लोग को जान because that time there was a lot of things was there. तो इधर she was very small, like she was around. So they don't take care. No, she was 8 days and my wife had a food problem and like she's supposed to go to Andheri. So then my dentist was in Andheri. So she said, तो उसको छोड़ा मैं मेरा योगा क्लास में जा रहा था। आधे घंटे में फोन आया, there was 3 elder women was there, my mother-in-law, there was one more maid, there were 3 women was there, they were all elder. They called me, they said, please come and take care. Then she was 6 days old. तो उन लोग they said, sorry, we don't want to take. तो ये जो आप बोल रहे हो ना, इसमें क्या होना ना, अभी हमको भी लगता है, हम लोग बेंको जाने अभी समझो टेंपल है, तो why should I call them? If they are not interesting. तो वो जो है ना अभी गैप हो गया. I think maybe our generation and हमारे बाप का generation में वो थोड़ा कम. आप कहना चाहते हैं कि अपना जनरेशन स्पिरिचुअल है? हो रहा है. Because when I went, only those who are fortunate they are becoming spiritual. when I So record हो रहा है? yeah no problem. घर पे सुन लेंगे तो आपके घर वाले फिर मेरे को फोन करेंगे. When I went to the Dwarka and I seen there people, so many people was there. बच्चे सब आ रहे थे. अभी जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, I used to tell my mom, चलो साथ में जाते हैं. हाँ बाद में जाएंगे. तो कहने का मतलब even like how she is saying ना, अगर अभी उनकी मम्मी को बोले मंदिर चलना है, मैं अभी मम्मी तो आती है ना? वो मूवी देखने का मतलब not. I'm just giving you example. She will be. She is very good. She comes regularly. I'm just giving you example. My mom is very spiritual. आ जाइए. बेटा नहीं आया ना तो वो अकेले आने से कराती वो लड़का है मतलब grandson. है. और ब्रदर. तो आपको ब्रदर है वो? अच्छा वो हाफ पैंट में आता है वो? सब अपडेट है. ओके और ब्रदर. तो मुझे मेरा स्कूल है, स्कूल में हम लोग हाफ पैंट पहनते थे टिल द 10th क्लास. ओके, आज वो माता जी का पूरा कमी पूरी कर रहे हो. जिससे आई से शोभा आंटी कमियां
आज तो Family stories. No, no, Very खतरनाक. This was the thing. yeah. So, yeah, your question along with him. नहीं कर सकते. And don't try to, interfere in their life. आपको करना दे रहे हैं ना, be happy. I have example of my own father. बहुत चिढ़ते थे पहले. सब हरे कृष्ण में क्या कर रहे हो, ये करो, करो, नौकरी वोकरी छोड़ के सब संसार में काम धंधा ये वो. Then over a period of time, now he at least says, हरि बोल. गुस्से में बोलते हैं, हरि बोल बोलते हैं. हरे कृष्णा, बहुत दिन से घर पे नहीं आया है. आ रहा हूँ. एक बार तो ऑफरिंग लगाया था घर में भगवान को. उस पर्दा लगा देते हैं ना ऑफरिंग लगाने के बाद. अपना सिस्टम बनाएंगे धीरे धीरे. Let her come to 16. तो अभी कर देंगे तो फिर उल्टा उल्टा हो जाएगा. अभी दिल्ली दूर है हो जाएगा. आपने कभी सोचा था कि 16 हो गया? Spiritual life is very, क्या बोलते हैं उसको, डायनामिक एंड इजी ऑल्सो. तो अभी एक बार क्या हुआ था, घर में तुलसी पत्ता डालना भूल गई मेरी सिस्टर. ऑफरिंग करते समय तुलसी डालते हैं ना, तो उन्होंने देखा अरे तुलसी नहीं डाला. He is not chanting, he has nothing to do. गाली देते रहते हैं. But he said, अरे इधर इसमें तुलसी नहीं डाला है, ये ऑफरिंग नहीं हो सकता पूरा. So sweet. So he is saying like that. Means what? Effect of the association. So like that. तो प्रभुपाद का एक कोटेशन है. प्रभुपाद कहते हैं कि जो बांस का छड़ी रहता है ना, बैम्बू, when it is young and कोमल रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? Soft. It can bend. Yes. एक बार बाम्बू बूढ़ा हो गया, फिर नहीं होती. बेंड नहीं होता है, सीधा ब्रेक होता है. Break. So elders, those who have, I'm not saying that they are not trained, but उतना emphasis नहीं है. So they can't be trained. That's very difficult. So उनको करने जाओगे कुछ तो ब्रेक हो जाएंगे वो, और आपको भी ब्रेक कर देंगे. So better you continue. Let them be happy as long as they are supportive. हेल्प कर रहे, करो बेटा, करो, अच्छा करो. बिजनेस भी संभालो, सब करो. Happy life for them and for all of us. Okay. So this is verse number 40, right? Acha, you have a problem on back. No, I don't have a problem. I'm just getting little cramps. Okay. So you sit on this thing. That's outside. Yeah, आराम से. That's outside. मेरे क्लास में भी कभी किसी को बोलता नहीं कहाँ बैठना है क्या. कुछ लोग ऐसे आके सामने बैठते हैं. मैं डर जाता हूँ. Don't look into my eyes. हमारे मंदिर में दो ब्रह्मचारी है, उनका फिक्स है. जो स्पीकर रहता है ना वैसा सर, उसको ऐसे देखते हैं. For 2 hours जो लेक्चर दे रहा है उसको ऐसे देखते हैं. तो मेरे साथ में ऐसा मत करना. Relax. किसी को अगर सोना है सो भी सकते. नीचे आ गया. Change. So this is verse number 41. Sorry, yeah. हाँ, इसमें एक पर्पट रह गया, controversial. Yes. So yeah, this is Varana Sankar, and that is Garbhadhan. So training is required to beget a children. Why? Because womanhood का जो purity है, उसके ऊपर बच्चे का purity depend करता है. माँ अगर सात्विक है, बच्चा भी सात्विक बनेगा. प्रेगनेंसी के टाइम में अगर माँ मांसाहार करेगी, बच्चा डेफिनेटली मांसाहार के संस्कार लेके आता है. If she reads scriptures, बच्चा बाद में उसको inclination रहता है. Not that he will be forced, but he has inclination to read the scriptures, become devotee. So that's why whenever someone is pregnant, we advise read Krishna book, chant, instead of watching movies. लोग क्या क्या करते हैं, कुछ ट्रेनिंग नहीं है, and they expect मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए. कैसे अच्छा होगा? प्रेगनेंसी के टाइम में क्या किया था आपने? पिक्चर देख रहे थे, यहाँ दुनियादारी कर रहे थे. बच्चा भी वही करेगा. जो संस्कार लेंगे वही संस्कार उसको मिलेगा. तो अभी जो हुआ. अभी आने वाला जो है, आपके बच्चे हैं, उनका मैरिज होगा, शादी होगा. Train them nicely. And then इसमें प्रभुपाद एक चीज लिखते हैं, that may be a little controversial for you. Prabhupada says, as children and see why women need to be protected. ये point है यहाँ पे. स्त्रियों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? Why women should be protected? प्रभुपाद लिखते हैं,
एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि प्यूरिटी ऑफ द वुमन डिसाइड्स प्यूरिटी ऑफ द child, and child मतलब population. The all populations, purity or their spiritual inclinations, or even not spiritual, even morally अगर अच्छे चाहिए आपको, depends on how the women they are pure. Then Prabhupada says, as children are very prone to be misled, women are similarly very prone to degradation. Now, you may say मतलब क्या हम लोग easily distract हो सकते हैं क्या? Is it something like that? मतलब not that the men are not easily degraded, only women are degraded. No, read ahead. Prabhupada says, therefore both children and women require protection by the elder members of the family. ये बात सही है? Do you require protection or not? Yes. Yes, absolutely. I mean, जब वो बोलते हैं ना, जब बड़े होते हैं घर में तो डेकोरम बना रहता है घर का, क्योंकि जब बड़े नहीं होते हैं तो चीजें इधर उधर हो जाएंगी, दिमाग इधर उधर होता है, so definitely elders are. So children and women, even if they are grown up, इसलिए शास्त्र में प्रिस्क्रिप्शन देता है जब बच्चे छोटे होते हैं, like they are protected by the parents. जब स्त्री बड़ी हो जाती है, she is protected by husband. जब बूढ़ी हो जाती है, she is protected by son. तीनों फेज में प्रोटेक्शन लगता है. Why? Because her life is like that, by bodily constitution and by arrangement of the nature. The arrangement of the nature is such that everyone is attracted to women, right? Why? Because the system ऐसा बनाया है for its own purpose. जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि पहले बनाया, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें पहले अपने शरीर से पैदा कर दी. Then he created male and female. And when male and female they united together, they started procreating and populating the universe. Now male and female, when they unite, when there is attraction of the sex life. If that is not there, why one will unite? Why one will take the pain of begetting children, right? So therefore, Shastra में इसलिए कहा जाता है, sex life is the biggest obstacle for spiritual life. If it is not regulated, if it is not controlled within the religious boundaries. And especially in case of women, because they can be manipulated by anyone at any time. आप देख रहे हैं ना, पूरा यहाँ से दिल्ली में यहाँ से रेप केस हुए, इधर उधर बहुत सारी चीजें हुई, इसीलिए वुमेन को स्पेशल प्रोटेक्शन देना पड़ता है, राइट? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं, किधर गया? By being engaged in various religious practices, women will not be misled into adultery. This is a fact, and this is not just a fact for the women, but men also. अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में एंगेज हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मटेरियल लाइफ. आज संडे को आप यहाँ बैठे हैं तो आप एंजॉय कर रहे हैं भगवद गीता. इफ यू आर नॉट हियर, देन किधर? उधर किधर? वेरी वेल, राइट? Definitely matters. अभी आज when Arya goes out with his friends and all, supposed Yes. to go out for a drive, his friends' mothers always tell me that I feel very safe that my daughter Yes. is with Arya. Yes. कि Arya will make sure कि वो घर पे अच्छे से पहुंचेगी. Yes. That is the effect of a good population. Those kids, they have way of training. So it is not exactly कि पूरा spiritual होना चाहिए. Even if you do social welfare activities, if you are engaged in that, still you are saved from unwanted, unnecessary, troubles of life, right? So that Prabhupada says, according to Chanakya Pandit, women are generally not very intelligent. Now, you may say, "Arey, matlab, we are not intelligent," and then Prabhupada says, therefore not trustworthy. ऐसा क्यों कहा गया है? I will tell you from chemical and biological point of view. कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पे? मेडिकल लाइन से कोई नहीं है. It is generally said, men are little rational, more philosophical. Not that doesn't mean women are not, and women are more emotional. Why they have to be emotional? Because that is the arrangement of the nature. If she is not emotional, she can't take care of the husband. If she is not emotional, she can't take care of the kids. उसको इमोशनल बनाया है तभी तो आदमी चलता है. घर में अगर स्त्री इमोशनल नहीं होगी, वो बोलेगी मैं भी मर्द के जैसी मेरे भी मसल से इतने बड़े बड़े,
I am also going, I will not cook, I will not clean. ये नेचर का सिस्टम में बनाया गया है. A female is designed in such a way that she assists the male. Doesn't mean she is subordinate or a gulam. In Vedic culture, woman was respected most. अभी क्या होता है in the name of आजादी स्त्री पुरुष दोनों सेम है. इवन कभी कभी स्त्री बोलते हैं मैं तो पुरुष से ज्यादा हूँ. तो देख लो फिर क्या होता है इसका अंजाम. What is happening? She is exploited, she is manipulated. There is no respect for the woman simply because she is not wearing good clothes. एक साड़ी पहनी हुई स्त्री की इतनी इज्जत होती है बताइए मुझे. और जो अपने आप को खुला छोड़ के पहनती है उसको क्या इज्जत मिलती है? People just exploit, isn't it? तो इमोशनल होना अच्छी बात है कि नहीं है? You are rational. She is emotional. Doesn't mean she is not rational. She is rational. Doesn't mean you are not emotional. You are emotional. Amount of rationality and emotionality is They basically difference. balance each other. Yes. ये सिस्टम बनाया है नेचर ने टू कॉम्प्लीमेंट. वो साचा रहता है ना कास्टिंग मॉल्ड का, पता है ना वो लड्डू लड्डू बनाने का एग्जैक्टली फिट होता है वो. एंड द प्रोडक्ट इज वेरी गुड. इज हैप्पी मोदक. तो आज मोदक है क्या? गणेश जी उकड़ीची मोदक. वेट और 15 मिनट है. So इसीलिए these purports, if not studied under proper scrutiny and discussion, can lead to controversy. अब क्या होता है कभी कभी, अब आप देखिए how they are superior than men. आपको बताता हूँ मैं. In any religious function, the maximum number of crowd is Female. why female? Because they have Education is like that. They yes. have that spiritual inclination. Yes. They can very easily have good faith in the God. बुद्ध थे ना गौतम पहले when he was Usha aunty, हाँ नहीं Shobha. Shobha aunty, no Shobha aunty Patel. not Shobha. तो उनकी जो डिवोटी थे ना किसके? बुद्ध भगवान भगवान बुद्ध के. हाँ. भगवान उनमें सबसे ज्यादा फीमेल्स. उनमें क्या? किसको में भी जाओ, कहीं भी जाओ. But I'm not. So today he is here is not because of him. It is Yeah. because the spiritual Yes. inclination comes from us. Yes. Correct. Unless. He was never into all these Yes, things. yes, yes. The credit is. To her, I say that. See, Krishna's glory is why because of Radharani. या Behind every man there is. You try to understand. Don't take credit for your 14 rounds. She is like engine, and you are like bogie, dabba, coach. The engine is there. She is taking care of the kids, family. Then you are confident. I can now chant my rounds. She is taking care. So इसलिए देखिए, but इसका disadvantage क्या है? देखिए, plus minus दोनों point रहते हैं. Men are more rational because they are not so easily, able to keep faith on God sometimes. They want reasoning. They want. There is a lot of reasoning. इतना reasoning की मतलब मरते दम तक reasoning तो chanting कब चालू करोगे? है ना अर्जुन है ना हाँ, वो भी कर रहा है reasoning. सामने एग्जांपल है. Yeah, सामने example है. Very much into गीता. लेकिन इसका disadvantage क्या होता है? Because women they are more of a emotional, they are rational. So sometimes when people want to manipulate them, misuse them, they can. इसलिए आपको भी क्या करना पड़ता है? शास्त्र के साथ कनेक्ट करना पड़ता है. You have to develop that scriptural intelligence also. And you have to develop devotional and emotional side. How to serve God and how to love. So ये complement करता है दोनों को. Otherwise यहाँ पे जो कहा गया है, मैं इसलिए प्रॉपर आगे क्या कहते हैं? प्रॉपर कहते हैं किधर गए हो? हाँ, अगर में जाने का बढ़िया. थोड़ा आगे एक दो लाइन छोड़ के. So the different family. Yeah, on the failure of such varnashram dharma, naturally the woman became free to act and mix with men, and the adulteries indulged in the risk of unwanted
पॉपुलेशन, जो कि आज हो रहा है, राइट? एक बार एक्चुअली प्रभुपाद को पूछा था, एंड प्रभुपाद एक्चुअली व्हेन ही वाज इन स्कॉटिश चर्च कॉलेज इन कलकत्ता 1920s के आसपास, तो उनके प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि वुमेन्स ब्रेन इज लेस, दैट्स व्हाई दे आर लेस इंटेलिजेंट. सो एंड एक्चुअली दे वेड, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं, वजन किया, देखा कि इनका कम इनका ज्यादा है. तो यू नो आफ्टर इस्कॉन वाज एस्टैब्लिश्ड, अब डरना, टेंशन मत लेना, सबका ज्यादा दिमाग है, कम नहीं है. तो विशाखा माता जी प्रभुपाद की डिसाइपल है, वो आई और बोलने लगी, प्रभुपाद दिस मैन आर सेइंग, मतलब वो जो हमारे जो प्रभु जी लोग हैं, दे आर, इसको मैं ना था ना, तो दे आर सेइंग our brain is less, so therefore we are less intelligent. So then Prabhupada said, so what do you think? Are you the body or are you the soul? Are you body or the soul? क्या है आप? Soul. क्या है आप? Soul. So when you identify yourself as a man or a woman, then you are less intelligent. If you identify yourself as a spirit soul, servant of God, you are neither less intelligent, not more intelligent, you are simply servant of God. ये सब डेजिग्नेशन लगा लेते हैं ना हम लोग, इसका दूसरा साइड है, एट द ट्रांसेंडेंटल लेवल. सो यू आर इंटेलिजेंट. और आज के तारीख में आप देखेंगे कितने साइंटिस्ट है, लेडीज बहुत सारे हैं, कितने इंडस्ट्री चलाते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बड़े बड़े, यू नो, अपने देश के प्रेसिडेंट कौन है? Yeah, yes. तो हु सेज दे आर लेस? Finance minister. फाइनेंस मिनिस्टर. Sitaman. और तो 5 साल सेकंड टेन्योर, राइट? Yeah. सो इतना गट्स है क्या आपके अंदर? नहीं. दे आर मोर पावरफुल. एक्चुअली शास्त्र में कहा गया है, लेडीज आर मोर पावरफुल देन मेन. Not different angles of vision. Like you know the story of Cleopatra and क्या था उसका कौन था? Caesar. हाँ, Caesar. you know that story, right? How he was manipulated. I mean, from negative point of view, the ladies are powerful in that way also, and this way also, because they are the one who bring everyone together in the family. You don't have that power. They have to bring everyone together, you know, keep a family atmosphere. Because he लगता है बाबा, if you don't get emotional fulfillment, you can't work in the office. लेके जाता हूँ आपको. You need that emotional battery. तो अभी आप बोलेंगे ब्रह्मचर्य को कैसे मिलता है? How do the brahmacharis get this? Yes, when we worship Radha Rani, she is the supreme goddess of fortune, supreme lady. So when you worship, you get that. Prabhupada का Radha Maharaj को पूछा गया था. But this coming. Yeah, so Radha Maharaj says that yes, behind every success of every man there is a woman, and for behind me is Srimati Radharani. So that's why his name is Radhanath. You know? This is actually the first name was something else. Like from Richard, the name was something else, and then he became Radhanath. Yeah, of course. Diksha हो गया ना? दीक्षा के बाद he took some, but तभी भी नाम कुछ और रखा है. Yeah, it was something else. Then he उनका नाम कुछ और की बुक में लिखा हुआ है. Okay, nickname रहेगा. जर्नी होम में निकनेम रहेगा. Initiation, and then when he got sannyas, sannyas के बाद भी नाम चेंज होता है, but they kept the same name. Radhanath and Swami got added. So this is the way. So this is quotation of Chanakya Pandit. Definitely Chanakya Pandit has given so many quotations on that. He was a very wise, you know, minister of Chandragupta Maurya. He will not give anything and everything here and there. He is quoting from Shastras. And we have to see things in context, not isolated 1 or 2 sentences. Otherwise, you will get confused. So you are intelligent, but just like small children, they are prone to degradation. Similarly, by constitution of the body and the mind of the womanhood, they need the protection. Otherwise, Prabhupada का इंटरव्यू है एक लेडीज के साथ वेस्ट में, तो वो इंटरव्यू में यही टॉपिक था. Why do you say that men are superior than, you know, women? Prabhupada said, I don't say that. I simply say that man has a particular duty to perform and a woman has a particular duty to perform.
We are just simply trying to separate their duties and don't try to equalize them on that basis. Just like Prabhupada said, a woman can become pregnant. Can the man become? बन सकता है क्या? चुप बैठ गई हो. करना भी नहीं चाहिए. बनना भी नहीं चाहिए मतलब होगा कैसे यार? नहीं होना चाहिए. ये कैसे होगा? They tried in US. Did they succeed? Yeah. क्या निकाला उन्होंने उसमें से? अभी वो पता है. नहीं करना है. Or maybe no, but they tried. राइट मतलब क्या है सक्सेस रेट? क्या सक्सेस रेट है उसका? आप मतलब बिना मेल फीमेल कॉम्बिनेशन के एक भी नए क्या बोलते हैं उसको जन्म दे सकते हैं क्या बताइए मुझे आप? इवन इफ यू टेक एन आर्टिफिशियल वो लेते हैं आज टिश्यू करते हैं कल्चर करते हैं बट स्टिल मेल फीमेल बॉडी इज रिक्वायर्ड ना. So a role of a woman cannot be played by a man. Similarly, इंसान का जो एक मेल का जो रोल है फीमेल कैनॉट प्ले. इसलिए हमेशा याद रखिए दिस इज अ जॉइंट कोऑपरेशन. आपका एक ड्यूटी है इनका एक ड्यूटी है. यू कैनॉट रिप्लेस हर ड्यूटीज शी कैनॉट रिप्लेस योर ड्यूटीज. बराबर है. तो व्हेन शी गॉट एंग्री व्हाई यू आर सेइंग लाइक दिस तो Prabhupada said in the west तो Prabhupada ने हेड शेव किया था ना तो उसने क्वेश्चन पूछा व्हाई यू शेव योर हेड्स. Prabhupada ने बोला व्हाई यू शेव योर लेग्स. Prabhupada was very with humor even hammer. So she was speechless. Shaving करते हैं ना legs. So Prabhupada said we need to have cool head and warm legs. Not warm head and cool legs. Very good man. Very good. Because there are no hairs, it's always giving cool air. हवा टकराती है यहाँ पे और उड़ती है. Right? So, yes, and Prabhupada actually try to, mention many times. Don't try to equalize everything artificially. जिसका जो रोल है उसका रोल है. एक ऑफिस में पियून का रोल पियून का होता है. He cannot play the role of CEO of the office, right? और CEO झाड़ू नहीं मार सकता. पियून का भी अपना इम्पोर्टेंस है. Pion has to play his role and the boss of the office has to play his role. They cannot be exchanged. बॉस झाड़ू मारेगा रोज आकर वो इतना बिजी है उसको हजार काम है बोलेगा अरे झाड़ू मारने के लिए है ना वो झाड़ू मारने वाला आदमी आपका लैपटॉप में चेक नहीं कर सकता आज क्या काम है किसको क्या चेक दिया कितने बिजनेस का ये वो नहीं कर सकता. Isn't it? So that is how. So this is a system created by God, by nature, just to make sure that things are coordinated, or achieved nicely. Because हमारा पर्पस क्या संसार में हम यहाँ पे सुख भोगने के लिए ना सुख भोगने के लिए एक मेल चाहिए फीमेल चाहिए फैमिली चाहिए संसार चाहिए. ये सेटअप बना के दिया भगवान ने. इसमें गड़बड़ करोगे तो इवन मेटेरियली आल्सो यू कैन एंजॉय. इसलिए आज ऐसे हो रहा है ना स्त्री कहती है कि मैं इंडिपेंडेंट फिर उसके 10 बॉयफ्रेंड रहते हैं इवन आफ्टर मैरिज. व्हाई? मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो कोई भी मुझसे फोन कर सकता है कोई बात कर सकते हैं. कब वैदिक सिस्टम कैसा था पहले इवन 50 years बिफोर एक जॉइंट फैमिली जो रहता था ना बड़ा जिसमें 5 भाई है तो बड़ा बड़ा घर मेल एंड फीमेल दे वुड हैव देयर सेपरेट सेक्शंस. लेडीज वुड नेवर कम इन द डायरेक्ट विसिनिटी ऑफ द मेल. अपने जगह पे काम करते थे घर में जो भी घर के काम है. ओनली ड्यूरिंग नाइट अ मैन कैन सी वुमेन नॉट थ्रू द डे. सो पर्दा लगा के रखना. इतना मतलब प्रोटेक्शन था इवन विद इन द फैमिलीज बिकॉज ये सिस्टम ऐसा है कि व्हेन दे कम टुगेदर देयर विल बी अ अट्रैक्शन ऑफ द बॉडी. अभी आदमी काम कर रहा है ऑफिस में उसकी पत्नी अगर आगे बैठेगी you will disturb, right? I'm not saying I'm giving an example to relate a sense that everybody has their role, they have to play their role, there is a time for everything. पिकनिक जाने पीने का टाइम होता है ऑफिस के टाइम में पिकनिक नहीं कर सकते आप. So there is a designation division for proper functioning and upkeep of the society. इस कॉन्टेक्ट में पढ़ेंगे तो परपट makes a very good sense. Otherwise लोग कहते हैं भक्ति वेदांत स्वामी से so and so. You are not understood what Prabhupada is trying to do, and that's why people unnecessarily, Indulge.
and then they go away from spiritual life. इसलिए जब तक शास्त्र को डिस्कस नहीं किया जाता प्रॉपर्ली एक अच्छे फोरम में, पानपट्टी के वाले बस बैठ के बोल नहीं सकते आप कृष्ण ने रासलीला क्यों किया, पानपट्टी वाले को क्या समझेगा, मालूम है उसको भगवत तत्व क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है. There has to be JOG course, Gita course, and then chanting of the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So please chant 4 rounds, 14 rounds, and don't worry, 14 rounds है आपका कर रहे हैं. कभी कभी इमरजेंसी आ सकता है आपके लाइफ में. You may not be able to chant. You may be able to chant just 4 rounds, 5 rounds. Then just note down. And then when you are already in vacation, कभी time मिलता है यहाँ वहाँ, try to cover it. But this is a rare case. Don't make it routine. नहीं तो क्या आता है, कुछ जो हमारे भक्त हैं देखता हूँ मैं, लिखे रहते हैं, कल 5 रह गए, परसों 5 रह गए, तो ऐसे करते करते 100 हो जाते हैं. 100 माला कब करोगे? ऐसा ऑफिस में करते क्या कभी आप? आज ऑफिस का ही काम रह गया, परसों करता हूँ. एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि इम्पॉसिबल. ऑफिस बंद भी करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल लाइफ भी बंद करना पड़ेगा, ताला मार दो. So that's extreme rare case. Hare Krishna. So we will meet next Sunday. This was a very important point, so that's why I took some time. It is very nice. But this is a place where you get confused and Men are from Mars, women are from Venus. sorry. Men are from Mars, women are from Venus. Achha. There's a whole book. Yes. Of that. Hey, what is the meaning of that? So they come from 2 different planets. Like in the sense they try to put it like that. That women and men come from 2 different planets. Their thinking is different. Their attributes are different. Why does Mars shine in Venus? अरे बाबा समझ लो, मार्स वाले इमोशनल होते हैं और वो दूसरे रैशनल होते हैं. Mars वाले rational होते हैं. Yes. And Venus वाले they are very soft. Yeah, so women get carried away easily. Women are emotional beings, so they get carried away. किसी ने अगर ज़्यादा स्तुति कर दिया, अच्छा लैंग्वेज, फ्लॉवरी लैंग्वेज बोल दिया, अरे तो तू इतनी अच्छी है ये वो है. इससे तो रहता नहीं इंस्टाग्राम लोग. Yeah. ऐसे तो होते हैं. एक जैसे हरी women एक जैसी है. अलग-अलग planet से दोनों. ये सोशल मीडिया आजकल इतना फ्लरिश क्यों होता है? दिस इज द रीजन. 4 लाइक दे दिया किसी ने, अरे वाह पूरी क्या सुंदर दिख रही है, अरे वाह अरे वाह. उसको लगता है मैं तो मिस यूनिवर्स बन गई. अरे प्रभु जी has 53K followers. मैं पहले बहुत पैट्रियोटिक था. अब उसमें बहुत सारे पोस्ट सब स्पिरिचुअल मैंने ज्यादा नहीं किए हैं. बट लास्ट संडे का डालना था. लास्ट संडे के पिछले कई संडे का बाकी है. है. आपका ही नहीं, बहुत सारे ग्रुप का. अभी वो धीरे धीरे सेटल हो रहा हूँ मैं. अभी जन्माष्टमी हो गया. Now I hope Sunday last Sunday ज़्यादा मिस नहीं किया. you missed a lot. That is the time when you started. Don't worry. Go to 14 in a week. Hey, oh, see, डरो मत बिल्कुल भी. But I was very lucky that this time what we have it here, the same time I was at Dwarka. And how many rounds you chanted in Dwarka? धक्का धुक्की में कहाँ राउंड चढ़ाने? देखो. You have to sit on one side and chant. There is no place. It तो क्या दिन भर धक्का मुक्की था क्या? हाँ कैसा हुआ था? I'll tell you because 2-3 दिन पहले इतना बारिश हुआ था ना, तो there's entire. So why we are living? Are we doing kirtan or not? Yes, we are doing 100% we are doing. तो क्या हुआ था? Because of the over flooded हो गया था, तो उन लोगों ने वो सब बेड द्वार का और वो सब बंद रखा. Okay, उसके वजह से. हाँ, तो suddenly over crowded. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gopinath Radha, Gopinath Radhe. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय श्री श्री गोपीनाथ भगवान की जय, जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, भक्त कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। I hope you study Bhagavad Gita, read, right? You don't read, please read. Whatever syllabus we cover, we read. He always says, no, Yes. But I'm honest. you're honest. Yeah. Okay. प्रभु जी वो हम लोग आए थे ना वो Halwa distribution. नहीं हाँ तो वो दिन जो कीर्तन कर रहे थे कौन थी माता कौन थी I don't know who was there chanting that time. Absolutely it was stunning. You liked? Very much. Absolutely. And that entire environment ऐसा था ना पता नहीं चक्रवात आता है ना हाँ, आपके हृदय के अंदर चक्रवात आ गया. just got into it Yeah. चले गए then we lost